शर्तें ऐसी लगती थी कि तुम ये 1 किलो बर्फी खा के दिखाओ, अगर खा गए तो 1 किलो बर्फी फ्री, उसके ऊपर से तो खाने की शर्तों पे ही खाना आता था। Then there used to be a parantha, they used to come with like lots of makhan, and it used to go into this debate of aap start kijiye, till it got divided into 12 pieces. In college, vada pav was your poorest meal because that was 5 rupees, I remember. Okay. So the day you're like really broke, you would go to a vada pav. There's a story about you getting nearly arrested in New York. Wow. What was that? I need to know this. जैसे ही ब्रिज पे तीनों गाड़ियां पहुंची, सर वो एकदम फिल्मी सीन था कि 8-10 पुलिस की गाड़ियां सडनली अपीयर हुई। वो एग्जैक्टली सेम लाइन, पुट योर हैंड्स ऑन द व्हील। मैं आप लोगों के साथ एक मेरी सीक्रेट है वो शेयर करना चाहता हूँ। वो क्या है ना, सुबह का नाश्ता जो होता है वो मेरा फेवरेट मील है, और मैं वो नाश्ता आज करने आया हूँ नट क्रैकर रेस्टोरेंट बांद्रा में। लेकिन जाइए मत, लेकिन आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 3 सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, 3 बेहतरीन इज अ गुड वर्ड, बेहतरीन एक्टर्स। पहले तो जयदीप अलावत, आप जानते हो उन्हें, फिर निकिता दत्ता, ब्यूटीफुल फैबुलस एक्ट्रेस, और कुणाल विजयकर, सॉरी कुणाल कपूर। तो चलिए जाते हैं नट क्रैकर में, नाश्ता मंगाते हैं, इन तीनों से मिलते हैं और फिर पूछते हैं खाने में क्या है। लेट्स गो। So we have a wonderful cast of people at the table today. खाने के लिए आए हैं सब लोग और थोड़ी बातें करने के लिए भी आए हैं। We've got Jaydeep Alawat, sir. Welcome to the show. Thank you, sir. We've got Nikita Datta, who's looking as gorgeous as ever. Thank you. And an old friend, if I may say so. My Ji, namesake, bilkul. Kunal Kapoor. So I'm going to start with you because the last interview I did was over tandoori chicken. Correct. And it was many years ago. Right. 13, 14 years 13 ago? years ago, yeah, Love Shav. So that was 2012, yeah. Correct. And after that, we are doing one more interview. Correct. Again over food. Over food, always. Yes. Best place to be. Superb. I know it's breakfast time और सबको भूख लगी है, नाश्ता खाना है। अगर हम लोग ऑर्डर करें, Yes, of course. whatever you want to eat, तो we can get that out of the way and continue our conversation. क्या खाएंगे सर आप? सर कुछ भी वेज टाइप है। Vegetarian type? हाँ, मतलब यानी सैंडविच टाइप कुछ है। Sandwich type? वेज सैंडविच। Sandwich What do type. you want in your sandwich? जो भी वेजिटेरियन हो। Vegetarian. So very specific. आपका ड्रीम क्या है? आप ड्रीम सैंडविच क्या है आपका? कुछ नहीं, इनको नहीं। फूड में आपको इंटरेस्ट है या कुछ भी चलेगा? नहीं है थोड़ा सा, पर वो बहुत ही देसी खाना है, मतलब वो एकदम You know they have दाल- desi दाल thing. They चावल। have a keema. You want a keema pav? कीमा Soya- देसी कब से हो गया? सोया हरियाणा का का कीमा। देसी खाना कीमा कैसे? सोया का कीमा है वो। वो भी नहीं है देसी खाना। Okay. सोया कहाँ से देसी? गाँव में कौन सोया बनाता है? Just like the chabi with like मेरा desi मेरा khana. favorite खाना है, मतलब राजमा, बाजरे की रोटी, क्या नाम है, आलू की बहुत ज्यादा मिर्ची वाली चटनी, लस्सी, लस्सी। वो सब मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ They have मुश्किल versions of it. हरियाणा Like they have a white वाले quinoa छोले। upma. कभी हरियाणा जाके बिल्कुल खाएंगे। बिल्कुल, पराठे ये सब है। किनवा उपमा खाएंगे आप? नहीं, नहीं। अभी तो नहीं, मतलब खा लेता हूँ अभी। कुछ तो मंगाते हैं आप, लेकिन थोड़ा हेल्दी खा रहे हो वेज आजकल। मंगवा दो। थोड़ा हेल्दी खा रहे हो आप? हाँ हाँ, तो हम कुछ मंगाएंगे आप। जी, जैसा हाँ? भी। And you, Nikita, what I do you think have? I'll go for a classic omelette, like a Classic masala omelette? Yes. चलो, कितने अंडों का? 2 eggs. You want me to get into that? 2 eggs made with very less oil, with all the veggies, mushrooms on the side, little cheese on the side. चलो, अच्छा, you heard, no? चलो, हाँ, okay. चलो। And you? मुझे भी I think I'll have an omelette and some pancakes. Lovely, omelets and pancakes. This sounds like a great order. Okay, first of all, congratulations on Jewel Thief. Thank you. It's everybody. The promos are looking fantastic. Y'all are all looking good, and this gentleman who has done such great work over a period of time, literally like the Amitabh Bachchan of OTT, is now become viral for his dance. Correct. And He's ये कैसे हो गया? Jaydeep Jackson. जयदीप जयदीप जैक्सन।
आप एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड डांस, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो आप, लेकिन कैसे लग रहा है कि सडनली यू आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर? क्योंकि इससे पहले किसी ने देखा नहीं सर, इसलिए कोई नई चीज़ पहली बार देखी है ना, तो और एक सबके दिमाग में स्क्रीन इमेज होती है एक्टर की, अच्छा ये कोई शायद उस तरह से होता है ना, जो हाथीराम को देख के नहीं सोचेगा कि ये डांस भी कर ये सकता है। सब हो जाएगा। वो इमेज इतनी स्ट्रांग होती है कि आप उसको टूटते हुए देखना अपने आप में सरप्राइज हो जाता है। लेकिन ये इमेज तोड़ने के लिए आप कभी सिर्फ कैसे परेशान हो जाते हो कि मेरी इमेज ऐसी बन रही है, अभी कुछ करना चाहिए जिससे ये इमेज चेंज, क्योंकि एक्टर है, यू आर लिमिटेड बाय योर बॉडी एंड योर पास्ट वर्क, सो डू यू? नहीं, उस तरह से एक्टर वाली इमेज तो टूटती रही सर। वो मतलब वो राजी से लेके पाताल लोक से लेके फिर महाराज, जाने जहाँ, महाराज वाज वेरी डिफरेंट, उन सब में वो टूटती रही वो इमेज। वही, बट ये डांसिंग वाली थोड़ी सी अलग सी हो, थोड़ा वक्त लग गया इसको। And you, what's happening with you as in what's the role? What are you doing in the film? You know, so I really like the fact that the trailer has not really given away what I'm doing. Yes, that's why. And that's why I can see how confused you are about this. And that's the feedback I've actually got from most people. But that's great because I want everybody to be confused. I want everybody to be curious that what is this character doing, because most people thought there was something going on with Saif, but then they've shown something happening with Jaideep over here. And in the middle of the heist, you have this one, I wouldn't say damsel in distress, but you She's have waiting this, for the cop to turn up. yeah. And what is she doing? Nobody knows. So I really want to keep it at that. way? I really want to keep it at that and just let like people guessing. But you're I'm excited enjoying about this project now. Absolutely. With the right kind of buzz around it, with the way people are perceiving it, with the hype that we are seeing all this while, I'm very excited about it. And you had some really good work coming out. Your Babar, for example, in the Empire was really good. You know, I watched it wholeheartedly and thoroughly enjoyed it. Thank you. And and you're looking tough in Babar. You look tough, but actually you're a sort of pleasant and sweet-looking guy. But you managed to, even in this, even in Jewel Thief, you got this. Even in Dawn, there was a sort of vulnerability and toughness to it. So, how are you choosing these roles, and what's happening? Well, I'm not. I mean, there's no conscious kind of decision that, you know, I'm going to play the tough guy or anything like that. In fact, I was just telling everyone is that, you know, I've always been cast as the peacemaker, right from Rang De Basanti. From Rang De Basanti. Right. He was. I mean, in Rang De Basanti, Aslam was the character that's always trying to make peace between everyone, right? So, ever since then, I've been like the poet or the philosopher, and you know, that kind of part repeatedly. They put you in a box and then they're like, stay there. Correct. So it's nice to play the tough guy. It's nice to have a gun, have a badge, slam a few people around. Yeah. You know, it's nice to do that, as opposed to being like, okay, you know, we can all get along now. Yeah. Otherwise, it becomes one-dimensional. Otherwise, Yeah. You need a little more excitement. Yeah, it's fun. It's fun. I've been really enjoying it, and in fact, some of the other parts that I'm doing that are coming up as well, they're also not consciously, but you know, they've ended up being the tough guy kind of parts as well. And I think it has to do with my physicality at some level. You know, I think my physicality sort of lends myself to, you know, playing that kind of part. And I'm allows you to surprised. eat pancakes. And I'm surprised nobody's offered me those parts earlier. Just announce, please. Yeah, please, come on, guys. What are you doing? What are you waiting for? Okay, our show essentially is a food show. So I'm hoping that we'll have a lot of खाने की बातें बहुत सारी करेंगे. Right from your earliest memories, what your food loves are. So I'll start with you, Haryana, and then a film institute. 2 parts of your life. You know, Haryana also you were doing theatre as a young boy. Not young boy, but after my graduation. After your graduation, because you're a young boy in today's day and age. And but you tried to also get into the army, and then you came back to doing theatre. Yeah. So Haryana mein, if I say ki, you already mentioned parathe and aloo, but what is the kind of food that would attract you the most? तो गांव में जब तक रहे, जब तक मैं गांव में रहा, तब तक तो वही एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर होता है खाने का, कि सब तो स्कूल जाते थे, मॉम डैड भी टीचर रहे हैं, तो सुबह सब तैयार हो, एक जो खाना बनता है वो सब वही खाना खा रहे. उनमें जनरली क्या होता है कि या तो
चने की या बाजरे की रोटी है जो सर्दियों में होता है, Correct. अदरवाइज गेहूं की रोटी है और बेसन के साथ मिला के जो मिस्सी रोटी जिसको बोलते हैं, वो लस्सी, मक्खन, चटनी, जो भी जो उस तरह से सब्जी का कोई ज़्यादा सुबह वाली जो सब्जी का कोई कल्चर नहीं होता, क्योंकि 8 बजे कौन बनाएगा, कौन बनाएगा सब्जी, करेक्ट। बस वही खाते थे। उसके बाद फिर रात बीच का जो खाना होता था वो बना के रखा जाता था, अगर किसी को खाना है तो दोपहर को खा सकता, बट जनरली वो कल्चर था नहीं। दिन में फिर आप अब गांव में हो, खेतों में सब कुछ है, गन्ने से लेके गाजर, मूली, बेर, ये सब आपके दिन का फूड होता है। आप स्कूल के बाद चले गए, गन्ने कुछ, हाँ खेत, अपनी खेत है सबकी, अमरूद हैं, जामुन हैं, तो वो चलता था। दूध एक बड़ा हिस्सा रहा है हमेशा से, सुबह आधा लीटर, दोपहर को आधा लीटर, रात को आधा लीटर, 1 लीटर। मतलब एक टाइम पे ये था कि जब थोड़ा सा वो होता ना कि आप अब उम्र बड़ी हो रही से कि आप लंबे होते हो, एक उम्र आती है ना 12-13 साल की, उस वक्त हमें गिलास में दूध पीना अलाउड नहीं था। जो पिएगा या तो लोटे में पिएगा या जग में पिएगा। ओके। और इतना सारा पूरा, इतना सारा तो हाँ। और ये बहुत कॉमन है, हाँ। आज भी है। बहुत सारे लोग हैं जो दिन में 2.5 से 3 लीटर दूध पीते Oh हैं। my आराम God, But this really? is buffalo बहुत milk, I'm आराम से। guessing, ना? This is मेरी bu- फैमिली में No, no, I'm saying this is buffalo milk or cow milk? दोनों Because हमारे गांव में बहुत buffalo milk हाँ। was very strong. मोस्टली भैंस का दूध। Yeah. क्योंकि But इट्स हायर कुछ लोग, हाँ। क्रीम वैल्यू एंड ऑल दैट। और बहुत नॉर्मल है ये, आज भी मेरी फैमिली में कुछ एक्सटेंडेड फैमिलीज में लोग लड़के जो हैं जो 20, 22, 25 साल के, एवरेज है उनका 3 से 4 लीटर दूध। My God, that's it. और वो वैसे वाले बच्चे हैं जिनको अगर फॉर एग्जाम्पल आज घर में खीर बन रही है हाँ। तो दूध इस्तेमाल होगा, हाँ। नहीं दूध फिर भी चाहिएगा। अच्छा, खीर खाने के बाद सोने से पहले दूध दूध पीना। चाहिए। Man. बट सी ना, अभी हम लोग पाउडर डाल के हाँ। प्रोटीन बना रहे हैं, ये वो। इफ यू कैन ड्रिंक जस्ट 2 liters ऑफ मिल्क हमने इंस्टेड, खुद दूध निकाला तो आधा तो वहीं से पी लेते हैं। उधर से डायरेक्ट। I can't. I'm going to also eat. You save some of that for me, huh? No, I'm going to save a lot of it for you. Yeah, I'm going बहुत to. सारा है अभी, बहुत सारा है। कुछ भी खा सकते हो। Okay, Nikita. Yes. Speaking about you, before you moved to Mumbai, Yes. you were in Visakhapatnam, or was it after Mumbai? No, so my father was in the Indian Navy, so I've actually moved around decently A lot. quite a bit. Majorly between 3 cities, which is Delhi, Visakhapatnam, and Mumbai. Okay. More time, of course, in Visakhapatnam and Mumbai, and the most time in Mumbai. In Mumbai. So the soul, the heart, everything belongs to this city. The core of this city. I have actually spent my growing up years majorly in Colaba. Correct. My college was there. I lived in Colaba. Navy Nagar. Yes, in Navy Navy Nagar. Nagar. Navy So that's Nagar. pretty much where I identify as like my growing up city to be. And you know, Colaba, for my money, is the best food. It is. The it best old food joints It in is Colaba. unbeatable, of course, because you know rest of the Mumbai city, if you see, has all these new restaurants that have come up and all. Yeah. The oldest restaurants of the city, Huh. and they're still standing and they're Yes. still packed all the time when you go. They're Yes. all in Colaba. In Colaba. Yes. जैसे कि कैलाश पर्वत is there. कैलाश पर्वत, Yes. उनकी पानी पूरी is It's unbelievable. not just that. There's Delhi Darbar. Delhi there's Darbar. Olympia Cafe, bheja masala. Yes, yes, Oh. yes. There used to be Piccadilly, which I believe Piccadilly unfortunately shut shut down. But unfortunately shut down. But yeah, you have all of these. There's this modern juice center. Yes, Bachelors. Bachelor on Marine yes, Drive. That's on Marine Drive. So yeah, But you went to St. Xavier's College. That's right. और St. Xavier's College के सामने का जो फुटपाथ है, there's a sandwich wala there, which is very famous. सैंडविच वाला था. There's also Jhumka Bakar, which is थोड़ा At the end, जाके, near, yes, yeah, yes, Jhumka yes, Bakar Kendra. Yes, yes, yes. And Cannon Pav Bhaji. Oh yeah, and then you have a lot of these Parsi restaurants in that gully next to Metro. Like there's Sasanians, I know. There's Kayani's Bakeries. Yeah. Which, these are all those old ones. In Cafe fact, when Ideal. we were shooting in Colaba, I Yeah. ordered from Jimmy Boy. Yes, Very Jimmy Boy. good Oh food. my Yeah, God, one such more. good food. Yeah, so Jimmy you have Boy a lot is of very these good. Parsi cafes, which there's Army Cafe, which is right at Fountain. Military Cafe. Army Cafe Military. Army Cafe. Army Cafe Yes, also? yes, Okay. yes. It's right where West Side is, where that old theatre Oh, used to that's be. the Army Navy building yes, also. Yes, yes, yes. At the back. Correct, Correct. So, and then you have Kala Goda, of course, where you have your old, And all the places. new sort of And color. a lot of new restaurants have come up there because I think a lot of buildings have gone into redevelopment Yeah. and stuff. Yeah. And in college, vada pav was your poorest meal because that was 5 rupees, I remember. Okay. So the day you're like really broke, you would go to a vada pav.
Otherwise, on the days that you were feeling a little rich and you were feeling a little nicer, you could eat a sandwich which was probably 20-30 bucks. McDonald's was your feeling sad day food. They used to have a happy meal menu. Sad. Yeah. So the 20 rupees happy menu that they would have, your aloo tikki burger and all, that was your sad day food. And But yeah. St. Xavier's College had a damn good canteen. It does. I'm getting to that. And then your feeling great day food was the St. Xavier's College canteen, of course, as you said, is very famous. You had your Chinese section, you had your rolls, those wrap and rolls, they had their Anna's canteen. All of these were generally around a 50 rupee meal. So that was your feeling great. Today I can afford this kind of a meal day. But that primarily used to be my food. Now when I think about it, it scares me because at that time I didn't care about calories and macros. And you should not worry about calories today. Huh? That is. Yeah, didn't bother about But any of this. Jajit, please start eating. Please start eating, karo. Same question. You grew up in Bombay, no? I grew up in Bombay, but you know, I spent a lot of time growing up also in Punjab and Delhi. Because we had a koti in Punjab. And also I had lots of, my entire extended family was in Delhi. So summers, winters, all the vacations and stuff used to be either Punjab or Delhi. So lots of food memories from actually Punjab and Delhi. So let me ask you this key question then. Food in Delhi is better than Mumbai, or Mumbai food is better than Delhi? That's a debate you should never get into. Yeah. Can't drink Bombay. You know, like actually, There you are. actually, for me, food now is, all the memories of food that I have is related to family. Okay. So Delhi, if you ask me about food, the first thing I'll think about is not a restaurant, but you know, my Masi used to have this very like large table, and there used to be like 10, 12 people sitting on the table for breakfast. And then she used to have a cook called Fu Mali. So Masi and Fu Mali and mom used to be cooking in the kitchen. And then there used to be a parantha, they used to come with like lots of makhan. And it used to go into this debate of aap start kijiye, till it got divided into 12 pieces. Correct. So everybody got the smallest piece. And then you waited 5 minutes more for the next parantha to come. And again it'd be, tusi khao na, tusi khao. Nahi, koi nahi. Divide karo. Phir wapas divide. So you'd actually sit for an hour and a half finishing breakfast, which was amazing actually. Because nowadays, हम लोग नाश्ता करते हैं जल्दी में निकल जाते हैं हम सब. But breakfast was always the heaviest meal of your day. Like that's how I think most of us have grown up. And we've always grown up on these paratha breakfasts. That's what has been advised. Yeah. No, what I realize is that he's a little quiet. आप थोड़ा कम बोलते हैं खाने. But initially आपने बहुत सारा passion के साथ खाने के बारे में बताया. ये लोग बात कर रहे हैं. But you've been, you know, how do I say? You've been sort of maintaining, changing your body depending upon the kind of role you've got. How does it affect your food? Does it upset you कि भैया अभी मुझे 5 किलो कम करने हैं, क्या करूँ खाने पे? I wanted to eat this and I can't eat that करके. होता है वो शुरुआत जब आप उस फेज को स्टार्ट करते हो ना, अब लगता है आपको एंग्जाइटी होती है, नॉट एंग्जाइटी बट गुस्सा आता है, तो होता है आपको इरिटेशन हो रही है बेसिकली, बट पार्ट ऑफ दैट जॉब यू नीड टू बी क्लियर कि अच्छा हाँ यार ये ज़रूरी है अभी इसका ये. और अगेन जैसे आप अभी आज भी सर मुझे ये जॉइंट्स के नाम क्यों नहीं याद है, क्योंकि मैं बाहर खाना ही नहीं खाता. मैं शहर में करीब 15-16 साल हो गए हैं. आई हार्डली रिमेंबर कि मैं कहीं पार्टीज में भी गया हूँ तो मैं खाना खा के घर आया. घर पे जो खाना बना हुआ है वही जाके वही खा के सो हुआ. मुझे कुछ अधूरा सा लगता है अगर घर में खाना नहीं खाया तो. यानी कि I agree with that. I second that completely. No, I love it also. Even given a choice, घर का खाना is always event food any day, but I'm saying, are you not into like trying restaurants or something? हाँ वो Yeah. अब तो हो तो हमारा तो आप घर पे रहते कितने टाइम ऐसे Yeah, भूखे ही मर जाएंगे. लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कभी, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि भैया इस रेस्टोरेंट के बारे में कुछ सुना है, जाकर वहाँ खाए, ये नया कुछ खोला है? नहीं. Can I take you out, Jadid? Please. I think we should do this. We should do this, you know. मेरे साथ हमेशा यही होता है. जैसे अपनी किताब ने बोलते हैं कि चल मैं वहाँ खाना खिलाते हैं, भाई बोल दें कि चल वहाँ का खाना. हाँ चलो. अब जाओगे? हाँ चले गए. खाना खाया अभी. खाना खाया भी लिया. वो ऐसा घर आके वापस आ रहा. हाँ फिर वो ऐसा लगता कि यार ये मैं रोज नहीं कर सकता. हाँ. True. I'll be like maybe one. गुस्सा आना शुरू हो जाएगा फिर. यार नहीं खाना. So how do you do when you're traveling? Like when you're not in India,
and you're outside India, then how do you cope up? Do you crave for Indian food that Yeah. जैसे मुझे लेबनीज फूड बहुत पसंद है। हाँ। अच्छा, लेबनीज तो फूड मैं अगर कहीं ऐसी जगह है जहाँ मुझे इंडियन नहीं मिल रहा है, हाँ, तो आई डायरेक्टली गो फॉर लेबनीज। Lebanese, right? बढ़िया पीना ब्रेड ये वो। Yeah. और अभी मैं जब शूट कर रहे थे हम रिसेंट टाइम में, जब एक्शन हीरो शूट कर रहा था मैं लंदन में, हाँ, मैं 12 दिन तक लेबनीज रोज रात को जाता था वहाँ उसके पास, पैक करके देता था, घर में रूम में आके खाता था। वहाँ खाने में भी थोड़ा ऐसा लग रहा था कि यार एक थोड़ा अकेलापन सा है, रूम में बैठा टीवी चला, अब आपका ध्यान नहीं है। करेक्ट। So this is I also find if I'm traveling alone और अगर शूट पे जा रहा हूँ या कुछ, मैं ऑर्डर करके रूम में ही खाता हूँ। सिर्फ कपड़े वपड़े निकाल के सब लूज उसमें नहीं हुआ। is always better that way. But it's true. I mean, what he was just saying, because there's a statement of his which I read and I'm going to read it out, कि मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ, पेल देता हूँ खाना, पराठे और लस्सी वस्सी। और कौन सोता था सर, ये सब इस शहर में आके सीखा है कि कैलोरीज ये हाँ, इतनी मेंटेन करो इधर। 2008 तक हाँ, मेरा वेट कभी भी 70 क्रॉस नहीं किया। 70 kg, इतना हाइट होके भी, इतनी हाइट होने के बावजूद भी कभी लाइफ में 70 kg क्रॉस नहीं किया। और मैंने दिन की 40 रोटियां खाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक दिन में 40 रोटियां तक खाते थे। But it's also the purity of the gehu that you're eating when you're there, no? And जितना आप खेल रहे हो, Yeah. 4 घंटे ग्राउंड आपका पे हो, metabolism आप काम Metabolism is very high. क्या बचेगा उस कैलोरीज में? और दूसरा वो खाने में कुछ नहीं है, Yeah. कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, जहाँ बेसिकली कार्ब्स है। इसके अलावा क्या है उस खाने में? कुछ नहीं। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं, और वो सिर्फ बॉम्बे नहीं, जो भी बड़े शहर हैं जहाँ 15 साल के बच्चे, लड़के लड़कियां दोनों ही, they're conscious about calories. Actually this is the age you should know. जहाँ आपको जितना ज्यादा खाना खाओगे ना, आपकी बॉडी उतनी ठीक रहेगी, क्योंकि एक टाइम के बाद वो आपका मेटाबॉलिज्म नीचे जाने ही वाला है। ये नेचुरल प्रोसेस है। एज के हिसाब एज के साथ साथ आप कम खाना शुरू करोगे। कम से कम 25-30 साल तक ये मत करो। आप भागो ना, काम करो, दौड़ो। आज मुझे नहीं लगता रोहतक शहर में बैठ के कोई कैलोरीज गिन रहा है आज भी। No, but it's also lifestyle. Out Lifestyle, here, we of have course, an easier lifestyle. I was just saying, my Lifestyle. grandfather was 92, and all he used to eat was chapati, ghee, and gul, and he had no knee issues. So he would just look at me and say, "What is protein? What are you But you know, doing?" but chapati, ghee and gur is good. It's great, आजकल it's की जो लड़के हैं वो अगर बर्गर्स खा रहे हैं और eating fast हाँ, food that is all a the time, then वो कैसे और चलेगा? क्या लाइफस्टाइल है? that you should really यहाँ come. खेलने के लिए ग्राउंड में कोई नहीं जाता, है ही नहीं ग्राउंड। जो जाते भी है वो तो संडे को, अच्छा हाँ उधर थोड़ी देर क्रिकेट खेल गया। क्रिकेट इज नॉट, अगर आप जेन्युइनली क्रिकेट को एज अ प्रोफेशन नहीं ले रहे हो तो उसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है। खड़े हो। आप खड़े हो बेसिकली गधों की तरह, नंबर आया तो आया, भागने का नहीं आया तो नहीं आया, और वो भी संडे को, सैटरडे संडे को चलो। अदरवाइज क्या करते हो आप? कुछ नहीं। There's a new fad of paddle, which people think is a sport, which you think is an activity, but that also doesn't really burn calories. There's no activity that we do when we're over here. Correct. We're all very stagnant. We probably go to the gym for an hour, but regular, everything is It's taken care of. sedentary, Yeah, slightly yeah, sedentary. correct. But this is what I mean. He's also said that in Rohtak he used to eat 15-16 samosas a day. हाँ खा लेते। हाँ. Because you're in the park, you're playing, you're enjoying, spend कर रहे हो पार्टी, कौन सा रोज खाने के पैसे होते थे सर? आज किसी की कोई तो पार्टी दे रहा है, तो आज पेल दो, क्योंकि ये शायद हफ्ते में 2 बार मिलेगा, महीने में 2 बार मिलेगा, महीने में 2 बार। नहीं तो फिर वो इतने पैसे होते कि आप 2 समोसे खा सकते। शर्तें ऐसी लगती थी कि तुम ये 1 किलो बर्फी खा के दिखाओ, अगर खा गए तो 1 किलो बर्फी फ्री, उसके ऊपर से। तो खाने की शर्तों पे ही खाना आता था। Do we have this offer here today by any chance? What do you want? Yeah, I'm good. All you want. You want dessert? I'll really Dessert? compete for it then. Okay, we should talk about Jewel Thief a little bit because after all, that's why we are here today. So let me start with you. Tell me about what you're doing in Jewel Thief. Tell me about the film. What should the audiences expect? Well, it's great fun. It's entertaining. It's a roller coaster ride. Lots of twists and turns. And the thing is that a film like this actually is very hard to make. People think that like something that's dramatic and serious and is very hard to make, which is also hard. But to entertain people and keep them hooked, I think is a bit of a challenge. And I think we got very lucky because we had a great team, really good actors, great directors, super producer who really
understands the genre really well. Siddharth, Siddharth, yeah, Siddharth, I mean, he's the master of this. So, I think people should just expect a really fun ride. And I was telling them there was this very senior actor who told me that unless you don't walk in slow motion on screen, you're not a hero. Are you walking in slow motion? I think a lot of us are. Yeah. There's a lot of like slow Entries motion when kind of we- shots my and slow motion, yeah. So we've got our slow motion shots. We're all we've got our So all our the boxes desire are getting ticked off. of being heroes and heroines is now sort of Yes. ticked off. Taken care of. And Jaideep, you've played many bad men जी in your life, okay? Here also the very stylish bad men you play, of course. But how do you make a little difference between कैसे आप बोल के ये इस रोल के जैसा नहीं होगा, you know? क्योंकि सर वो पेपर पे थोड़े अलग होते हैं ना, राइटिंग में होगा. राइटिंग से ही अलग होते हैं, तो आप उनका बैकग्राउंड सबका अलग है, सबके कपड़े पहनने के स्टाइल अलग है, सबके घर अलग हैं, तो आधा तो वैसे ही विजुअली फर्क आना शुरू हो जाता है. करेक्ट. जब आप उसको पढ़ रहे होते हो, जब आप उसकी तैयारी कर रहे होते हो, तो स्क्रिप्ट में चीज़ें पढ़ी होती हैं कि अच्छा हाँ ये उसकी वजह से ये अलग है, तो आप उन चीज़ों को पिकअप करते हैं जो बहुत ही कांस्टेंट बिहेवियर है किसी चीज़ का. एक कैरेक्टर के डिज़ाइन में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बिहेवियर जो है ना बहुत ही कांस्टेंट होते हैं, इसको मेन धागा बोलते हैं ना आप पे, कि ये आदमी फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट थ्री ऑफ अस, दैट मैन इज अ वेरी वेरी सॉफ्ट फेमिनिन टच के साथ फैमिली के प्यार में एक इंसान है. करेक्ट. ये बेसिक थ्रेड है, Correct. एकदम बेसिक थ्रेड, इसमें कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगा. बाकी चीज़ें फिर आप उसके आसपास बुनना शुरू कर दो. लाइक कोई पेंटर है, आप एक स्ट्रोक मारते हो, नहीं समझ में आ रहा क्या है, दूसरा तीसरा, तो आप ये स्ट्रोक्स करते रहते हो जब तक कि एक तस्वीर उभरनी शुरू नहीं हो जाती. और वो पढ़ने के साथ साथ होता रहता है, हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलता है. अच्छा हाँ ये भी एक नई चीज़ है, ये भी एक नई, फिर आपकी टीम अच्छी होती है. तो क्योंकि अब मैंने महाराजा में देखा आपने वो एक इवन फिजिकलिटी लाई थी उसमें, जहाँ एक जेंटल स्माइल है, बिकॉज यू आर प्लेइंग sort of, you know, supposed द मैन थिंक्स ही इज अ गॉड. he's a god, correct. तो वो भगवान के तस्वीर में कैसे थोड़ा स्माइल रहता है ना चेहरे पर, वैसे भी आपके फिजिकली भी एक ऐसा बैले जैसा चल रहा था, जी, you know, जी, जी. आपके फिजिकल मोशन में. That's very It's a interesting. stage ना, सालों तक प्रैक्टिस होती है, मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ की, उनके दिमाग में. Correct. So the one actor who's not there today is Saif, but he's there in the film, principal character. A little bit about what he's up to, what is he, what role he's playing, how is he to work with, what exciting things. Will be better place to tell you because my character is somebody who always turns up late. Okay. Today also he came little late. Huh? Still a He said character. traffic and all, Excellent but character, yeah. He's the cop from the 80s who's Okay. there 5 minutes after everyone's gone. So. okay. Funniest thing is, moments before a slightly serious scene, he will always crack. क्या कुछ हो? And Oh, then really? Sunny's every time I had like a mildly romantic bit to do with him, Saif would say something very funny and obnoxious, and in my head I'm just laughing. And now the action has already happened, and now I'm just like, how do I do this? But this guy has fully snapped out Doesn't of it it. make your job easier? It does. Trust Yeah? me, it does. It really makes it easier for both of us. But that's the best part. He will really crack up everybody around him. And it's not just like people in front of the camera or the director. Anybody from the crew. You'll see him interacting, cracking, and he cracks a lot of jokes on himself, which I think is fab. Like It's the most having the art of self-deprecating. Yes, correct. It's the best thing to do because it also gives you. I think it also comes across as you're so secure with yourself. You know your flaws and your pluses, and you're very okay with that. I love that about him. I did a film with him years ago, which Siddharth only directed, called Salam Namaste. And I turned up in Melbourne to shoot, like very coy and. Oh yes, you're playing the boss. Yeah. Yes, yes. And and I'm not in the industry, so everybody's a star around. Okay, so मैं थोड़ा डर के जा रहा था, but instantly on seeing me, to make me comfortable, to not have the weight of being surrounded by Kareena Kapoor and Preeti Zinta and Saif Ali Khan and all that. So that quality is very nice. It's sort of make you comfortable. Yeah. And he's a generous co-star. I mean, he's not. Yes. I've worked with some co-stars that are not very generous. They want And you every All the line. footage, all You the won't every name them close right up. now. Yeah. No, but he's also like a But he's very not that guy. thinking actor. Like he'll think for you also. Like, something as small as he's just like,
do you think, like, would you want to, like, he'll get into that zone, which I think is fab, because actors as a species are very selfish people. All they think about is me, me, me. So to have co-actors who are so giving, I've been very lucky with him and Jaideep, even Jaideep for that matter. Lots of times he's come and he's told me, why don't you do it this way and all of that. I really appreciate this. I think that's the best thing to have. True. So I think generous actors should share, and generous actors can also be selfish, because if I share with you, even my role will look better then. You know? Yeah, and I mean, usually what happens, I mean, I remember when I was working on Rang De Basanti with Amir, he was, he pretty much gave away the climax to Siddharth in Rang De Basanti. It was, the climax was supposed to be all of us going to the radio station and, you know, saying some words. And Amir said, you know, why doesn't just one person go and, you know, speak on the radio, and everybody else should be doing what they're doing. So everyone assumed that it would be him. And he said, but you know, who's the smartest guy in the group? Like, who's the most well-spoken guy in the group? Is Siddharth. So let him take over the radio, right? And that was just like, any other actor would have said, यार मैं हीरो हूँ, मैं तुम सब यार साइड पे हो जाओ, मैं अभी जाके रेडियो पे बोलता हूँ, तुम लोग अपना काम-काज करते रहो. But he was, and his logic is the same as what you're saying, is that if every character in the film works, the film works. And if the film works, it's great for me. No, but that's very true. You know, because if you see in Dangal, at no point you see him suddenly say that, you know, I have a heroine and I want a romantic track for myself or something. He doesn't deviate from that. So that really works like this. You've acted with Kamal Hassan as well. Yes. Yeah? And there's a story about you getting nearly arrested in New York. Yeah. Wow. What was that? I need to know this. After 9/11, time हो गया था. Just before the Christmas time, already high alert थे America. We were shooting on this, I think, Brooklyn Bridge. वो और सर चाह रहे थे कि पूरा डायलॉग ब्रिज पे हो जाए. तो ठीक है जी, अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बगल में राहुल बोस बैठे हुए, सीन हमारा ही दोनों का, और पीछे गाड़ी में कैमरा रखा हुआ है, एज अ ना जूम लेंस टाइप, कैनन टाइप लगता है वहाँ, और एक कैमरामैन और कमल सर वो डायरेक्ट भी कर रहे थे. एक आगे गाड़ी चल रही प्रोडक्शन की, जिनको शुरुआत करनी है, और एक पीछे एडीज बैठे हुए हैं, उसमें मॉनिटर रखा हो जो. ठीक है जी, जैसे ही ब्रिज पे जाएंगे, पहले ही हिदायत होगी, जैसे ही ब्रिज पे जाए थोड़ा स्लो चलेंगे ताकि सीन पूरा हो जाए. तो एक फर्स्ट लेन पकड़ के आगे वाली गाड़ी ने टोल, वो ब्रिज पे ही टोल है, वो हुआ, अब चलना शुरू किया, सीन कर रहे हैं. एक चक्कर मारा, उनको लगा कि ये पूरा नहीं हुआ है, ठीक से नहीं हुआ है, एक और पूरा घूम के आना पड़ता, आधा घंटा. वापस आए, फिर से टोल दिया, फिर से स्लो और थोड़ा और स्लो चलाओ, गाड़ियाँ क्रॉस हो रही हैं. तो उसमें भी वो एक चांस और लगे देखते. जैसे ही ब्रिज पे तीनों गाड़ियाँ पहुंची, सर वो एकदम फिल्मी सीन था कि 8-10 पुलिस की गाड़ियाँ सडनली अपीयर हुई. वो एग्जैक्टली सेम लाइन, पुट योर हैंड्स ऑन द व्हील. और थैंक गॉड उससे पहले एक सीन में राहुल बोस अंडर, वो नहीं एक जगह है, आपने कई बार फिल्मों में देखा, ऊपर ब्रिज दिख रहा है और यहाँ वहां नमाज पढ़ने का भी सीन था. और मुझे अंदर से लग रहा कि आज बस गोली मत मारना, पहले सुन लेना. आप नमाज पढ़ रहे थे वहां पे, राहुल में वो पढ़ रहा था, वो उधर बैठा हुआ जहाँ पुलिस वाला है. तो उधर से हो गए, लेफ्ट हैंड ड्राइव है तो इधर आगे दो, क्योंकि ड्राइवर के पास जाना जरूरी है. तो और वो एग्जैक्टली ऐसे हॉस्टल पे आता, कूल डाउन द विंडोज, पुट योर हैंड ऑन द व्हील सो आई कैन सी इट, डोंट मूव. और वो सायरन्स आपके दिमाग में घूम रहे हैं, शीशे बंद है, ब्लैक गाड़ी. मेरे दिमाग में बस एक है, भगवान बस इनके हाथ से गोली नहीं चले, एक बार पूरी बात हो जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा. किसी ने उनको बोला, सर ने बोला कि वो आगे जो गाड़ी है उसमें परमिशन है जो भी है, और मेरे कान बंद हो चुके थे तब तक. मैंने कहा इतना डर गया था, मैंने कहा भाई आ जा. तो थोड़ा सा फिर वो कूल डाउन होता दिखा मामला. मैंने कहा ठीक है, गोली तो नहीं पड़ेगा. तो हम भी थोड़ा खुल गए, ठीक है. इतनी देर में राहुल बोस पता नहीं क्यों उनके दिमाग में आया, वैसे घूम के बोले, एक्सक्यूज मी ऑफिसर, प्लीज हरी अप, आई हैव अ फ्लाइट टू कैच. और वो जेन्युइनली उनको जाना था उस दिन. मैंने कहा ये बात यहाँ बोलने की जरूरत नहीं थी सर, प्लीज ये मत करो. एंड ऑफिसर या बस इतना ही, खत्म हुआ. और होता ना आपका हरामी दिमाग कि अगर आप अरेस्ट हो जाते
तो पूरे इंडिया में तो धूम मचाती धूम मचाती पूरा। वो एक्टर पकड़े गए, उनमें से एक जयदीप अलावत और एक कमल हसन। कमल हसन पकड़ गए। और कमल सर मतलब इतने स्वीटली he did not say a single word, चुपचाप, उनको पता है ये मेरी सिचुएशन नहीं हैंडल करनी, लोगों को हैंडल करने दिया। और फिर इतने, क्योंकि आप आ तो गए यहाँ से, ब्रिज से वापस तो जा नहीं सकते, वो एंट्री हो चुकी है, जाते जाते फिर से टेक लिया हमने। Always a filmmaker, जो भी हो। अच्छा परमिशन थी, कभी कभार हम परमिशन के बगैर बिना शूटिंग भी कर लेते हैं, बट वहाँ तो ये रिस्क ले भैया। तो बिना परमिशन के भी सुना है। Dev Anand used to tell the story, sorry, Naseeruddin Shah used to tell the story about Dev Anand film that they were shooting outside Wimbledon. No permission. गाड़ी में गए, रैकेट हाथ में गए, शॉर्ट पैंट पहन के, and anybody looking, nobody looking, लगाओ कैमरा, roll and act and go and run away. भागो, जो 2-3 टेक करो और भाग जाओ वहाँ से। वो टाइम अलग है सर, आप तो अभी नहीं कर, अभी नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता। It's very 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 risky. So listen, it is wonderful talking to you guys. I hope you all have eaten enough. Yes. You I'm most worried about. नहीं मैं एकदम मस्त खाया सर। आप खाते नहीं है कुछ इसलिए। ये भी चखा मैंने, बहुत कमाल है। It's quite nice, yeah. And best of luck for Jewel Thief. What are the next stuff? What's on the line right now? So there's a film I've just finished with Chiranjeevi sir called Vishwambara, which is in Telugu. Telugu. There's a film for Amir's production. Okay. And then there's Ramayana, which I'm doing Which I heard about, yes. Yeah. So some stuff coming up, and also writing lots of stuff. Some I want to act in, some I want to produce. Yeah. So I think 2 of them should go into production at some point this year. That's great. So there's a lot of shit happening, man. There Very is. good. So any roles, please offer. Huh? I'm happy to act. And you, what's next on your list? I think I'll wait for Jewel Thief to come out and then speak about it. But yeah, looking forward to Jewel Thief as of now. Yeah, and a couple of secret things which he refused to tell on camera. I'll see if I can get things out of her after we cut. Post. Hopefully, yes. Stuff her face with some dessert and Yeah, give her a sugar rush. Yeah. And then That's or happy. bolo ab. That's happy. Yeah. And sir, आपका कैसा चल रहा है? क्या plans क्या हैं आगे? मुंह में अब please आराम से. It's good. People will see us finally eating. Timing. Fab timing. सर मैंने फैमिली मैंने खत्म किया। Yes. Season 3. I did a film with Vipul sir, Vipul Shah, मैं और शेफाली मैम, and Abhishek Banerjee, a few other actors also. It's called Hisab, coming out very soon, I think, hopefully next month. And a film called Hawaii Fire with Anand sir production, Anand L. Rai. Yeah, few Good. And all interesting characters and roles and all that. very different characters. Superb. So Jewel Thief coming out on Netflix. When is it coming? 25th. 25th of April. So Jewel Thief coming out on Netflix 25th April. Please everybody watch it. Thank you guys. It was a pleasure talking to you. And this amazing food. Visually also. कट होने के बाद खाएंगे बाद में सब Taste कुछ। wise. Yeah. और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज राइट टू अस, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए खाने में क्या है। You know, where you get the best takuri is Amir has a house in Panchgani, which he bought from Homi. Homi, Adajania, yes. And Homi's cook is the cook is the same who's been with Homi's family for 25 years. Oh, so Amir has retained him. He's retained the cook also. So the cook still stays there. Makes the best Parsi food. So you end up in Panchgani to going to Amir's house, not expecting Parsi food obviously, and end up with like. But Panchgani's got one Prospect Hotel, which is very good. which is very good food, and it's not Irani Parsi food. And there's one more which name I keep forgetting, which is the slightly better looking hotel. There's a bunch of them actually, really good ones. I've forgotten the names. And I went recently, after years and years, I went to Mahabaleshwar, me and a couple of cousins, and Dina Hotel. 6,000 rupees per person, per room, including all meals. Wow. Oh. And they give you fixed breakfast. Breakfast, you want parathas, you want eggs, liver on toast, keema on toast, this, that and the other. Full Parsi lunch and Parsi dinner.